Thank you and welcome for joining this session. Now, here the discussion topic is the basic structure of the Indian constitutions. Basic structure of Indian constitution, मूल ढांचा भारतीय संविधान का जैसे सोशलिज्म, समाजवाद, फिर supremacy of the Indian constitution, supremacy of the Indian constitution, sovereign democratic संप्रभुत्व democracy प्रजातंत्र and republican nature of the Indian polity and republican nature of Indian polity. नेक्स्ट आइए independence of judiciary federalism, unity and integrity of the nation, फिर हमारा आ जाएगा इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान की बात है ये। फिर जुडिशियल रिव्यू, नेक्स्ट पॉइंट 8, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32, 32, 136, 141, 142, राइट। नेक्स्ट आइए, और भी जो फीचर्स हमारे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, equality before law, next हमारा welfare state principles, of welfare states,
कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत, फ्री एंड फेयर elections, free and fair elections, separation of powers, separation of powers, parliamentary system, of principles of equality. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो देखेंगे मूल संरचना का, जो भारतीय संविधान का। सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, महत्व मौलिक संरचना कहिए या ढांचा कहिए। ये हमारा जो है ये कोड प्रिंसिपल्स है, जिससे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत छेड़छाड़ नहीं किया जा सके। इससे क्या क्या फायदे हैं, क्यों है बात, वो देखिए हम आगे करके। पहली बात तो यह है कि प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, ये क्या है, जो हमारा भारतीय संविधान का जो आदर्श है उसकी यह रक्षा करता है। इसे इट हेल्प्स प्रिजर्व द आइडियल्स enshrined in our framers of the Indian constitutions, share democracy, sociology, justice. तो जो हमारा जो है डेमोक्रेसी की बात हमने की, सेकुलरिज्म की और ये जस्टिस की। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द constitution, supremacy of the constitution square. जैसे this basic structure prevents temporary minorities in a parliament from altering the constitution's core values, and this ensures the supremacy of the constitutions. Then come to uphold the separation of powers, जो भी हमारा जो शक्ति का जो सेपरेशन है बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, इस डॉक्ट्रिन को अपहोल्ड करता। The doctrine maintains the independence of the judiciary from the legislature and executive. This fosters a healthy system of checks and balance.
judiciary, judicial, legislative और फिर एग्जीक्यूटिव शेयर अलग अलग है, इनके बीच पावर्स का शेयरिंग। ये कानून हो गया, ये विधायिका हो गया, ये कार्यपालिका हो गया। नेक्स्ट आते हैं safeguard the fundamental rights. Safeguard the fundamental rights. ये मौलिक अधिकार को सेफगार्ड करता है। It protects the rights of fundamental rights of the citizens against any arbitrary amendments that could undermine them. And the next point, fifth one, dynamic and progressive constitution. Dynamic and progressive constitution, right? Now this basic structure doctrine ensures that the constitution adopts to changing times while preserving the core and the basic principles of the Indian constitutions. This encourages judicial activism. This basic structure doctrine empowers the judiciary to strike down unconstitutional amendments, acting as a check on legislative and executive actions and powers. Now, come to the criticism. Criticisms of basic structure doctrine, right? आलोचना जिसको कहते हैं हम लोग। तो पहली बात इस संबंध में कहा जाता है कि इनकॉन्सिस्टेंसी विथ सेपरेशन ऑफ पावर्स, inconsistency with separation of power, inconsistency with separation of powers, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में इनकॉन्सिस्टेंसी है, एक किस्म के रूप में है। ये क्रिटिक्स augment and opine that the doctrine infringes on the principles of separation of powers, as it gives the judiciary the power to review amendments, potential undermining the work of the parliament. एंड नेक्स्ट संबंध में कहा जाता है इसके बारे में ये है, वही है कि एम्बिग्यूटी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, एम्बिग्यूटी ऑफ कोड प्रिंसिपल्स। ये कहा जाता है कि जो मौलिक सिद्धांत है ना, वो एम्बिग्यूटी है, भेग है, अस्पष्ट है। ये क्या है कि the lack of a clear definition
of what constitutes the basic structure makes the doctrine vague and open to analysis, interpretation, leading to uncertainty. नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, डिस्कस करते हैं, वह जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच। Some of the scholars take it as the invocation of the doctrine as judicial overreach, where the judiciary steps into the legislative system domain. For instance, the Supreme Court declared the National Judicial Appointment Commission Act 2014 null and void using this doctrine. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट 2014, इसे बेसिक स्ट्रक्चर के आलोक में इसे नल एंड वॉइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट एक और भी है, वो ये है, पॉइंट नंबर 4, जुडिशरी एज a decisive chamber. Judiciary as a decisive chamber. जैसे this doctrine has been criticized for turning the judiciary into a third decisive body within the constitutional framework, possibly diminishing the legislative power of parliament. यानी judiciary को एक decisive chamber मान लिया गया है, जो पार्लियामेंट का जो डिसीजन होगा अमेंडमेंट के साथ, उसे नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है, राइट। अब हम कुछ केसेस को देखते हैं जो इससे इन्वॉल्व होता है। So, cases involving the basic structure doctrine. Basic structure doctrine cases involved, right? से एक केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, यूनियन ऑफ इंडिया 1951, राइट। नाउ ये जो आपका केसेस है, इसमें क्या था कि दी कोर्ट, आई मीन द सुप्रीम कोर्ट upheld the first amendment act, affirming parliament's power to amend the constitution including fundamental rights, खासकर जो राइट टू प्रॉपर्टी को इलीगल, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो लीगल राइट कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए संपत्ति का अधिकार, लीगल राइट कर दिया गया, कानूनी का अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट आइए सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
versus State of राजस्थान, ये 1965 का केस है, 1965। द कोर्ट, इसमें क्या था कि द कोर्ट upheld द 17th, याद रखिए, अमेंडमेंट एक्ट 17th, ये पहला जो था फर्स्ट अमेंडमेंट से था, ये 17th अमेंडमेंट एक्ट है। ये इसमें क्या था, the court upheld the 17th Amendment Act, but some justices dissented, arguing the fundamental rights were immutable. नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड वन, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1967 का केस है। 1967 केस है ये द कोर्ट, इसमें क्या था कि द कोर्ट ruled that Parliament cannot amend the fundamental rights, declaring amendments as laws subject to judicial review under Article 13, याद रखिएगा, under Article 13। Next, look at the Keshwanand Bharti versus State of Kerala, 1973. Keshwanand Bharti versus State of Kerala, केरल सरकार का। ये था कि this case introduced the basic structure doctrine, याद रखिएगा, basic structure doctrine का इंट्रोडक्शन हुआ है। Sure, the court so just come to the case introduced the basic structure doctrine, giving permission to amendments but limiting those that would undermine fundamental rights. Amendment का तो अधिकार है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स बाधित नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ वन, 5वें नंबर पे है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ये 1975 का है, 1975। ओके, here क्या था, the court invalidated parts of, याद रखिएगा, the court invalidated parts of the 39th Amendment, reinforcing the basic structure doctrine, याद रखिएगा, 39th Amendment। Now, next one, Minerva Mills
Minerva means versus Union of India. यूनियन ऑफ इंडिया ये हमारा 1980 का 1980 का है, राइट। इसमें क्या था कि कोर्ट स्ट्रक डाउन शटिंग प्रोविजंस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट, shutting that judicial review is a core part of the constitution. So हमारा ये इसका जो है याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट की बात है इसमें। और नेक्स्ट आता हूं वो आपका जो है पॉइंट नंबर 7 में हम चर्चा करते हैं। 7 में जो है हमारा वह है इंदिरा Swani versus Union of India, Union of India 1992 1992। ये क्या है? The court updated the court upheld the 27% OBC reservation. It emphasized equality as a part of the constitution basic structure. याद रखिएगा ये जो हमारा इंडियन बस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1992 का जो केस है ये हमारा 27% ओबीसी रिजर्वेशन। नेक्स्ट आइए इशान बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया ये 1992 का केस है ये, राइट। इसमें क्या था कि सॉरी 1994 का 1994 का ये है। The court affirmed that that federalism, socialism, and democracy as a part of the Indian constitutional basic structure. क्या हुआ? Socialism, secularism, and democracy। याद रखिएगा 3 टर्म जरूर। समाजवाद, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये इशर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में क्या संदर्भ है इससे। और देखते हैं हम लोग कि IR Palau versus state of तमिलनाडु, ये केस है हमारा 2007 का, ठीक है। इसमें क्या था कि the court ruled that laws in the 9th schedule are subject to judicial review if they violate the constitution basic structures। इसको याद रखिएगा, ये जो हमारा हुआ कि 9th schedule of the Indian constitution। तो इस तरह से देखा आपने कि जो हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरल जो केस 1973 का है, दिस इज द basis of evolution of fundamental basic structure doctrine। और
इससे आपने देखा कि what is the basic structure of the Indian Constitution, key principles, the importance of basic structure, Christians thereof, and the cases that involve this basic structure of the fundamental rights. That's all for this talk. Thank you.